Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the cause and effects. Let's start. Hey students, we are at the light board, and as I have told you in the intro, today we are going to discuss another important type of logical reasoning questions, that is questions related to cause and effect. Now, cause and effect, it is a very common phenomena in our lives. Every day we try to find out the causes of different incidents happening in our life. कितनी बार हम कहते हैं यार ये मामला इस वजह से ख़राब हुआ, तुम्हें नहीं पता इसकी वजह ये थी. कितनी बार हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि किसी को डायरेक्टली जो है वो हम इफेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो शायद ये काम भी ना होता. दिस इज़ व्हाट वी डू एवरी डे. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है. जैसे नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हम कह रहे थे ना, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी मैंने यही कहा था कि नॉर्मली हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं जाते, डिफरेंट चीज़ है एक. या हम बात कर रहे थे सिंबल सीरीज़ की, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते. बट दिस थिंग इज जस्ट लाइक द प्रीवियस लेक्चर वी हैड रिगार्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे हम कोर्स ऑफ एक्शन बात कर रहे थे ना कि दैट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन, लास्ट लेक्चर में हमने किया था. तो ये भी बिल्कुल वैसी ही बात है. कोर्स ऑफ एक्शन भी कॉमनली हम कर रहे होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट भी हम कॉमनली कर रहे होते हैं. पैटर्न क्या है इसका? बड़ा सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको two statements will be given. दो स्टेटमेंट्स आपको दे दी जाएंगी और उन दो स्टेटमेंट्स के मुतालिक जो है वो आपसे पूछा जाएगा you will be given 5 options regarding these two statements. इन स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको 5 ऑप्शंस दे दी जाएंगी. नंबर 1 तो क्या होगी? The very first one will be statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. बीटा क्या होगी? Statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. तीसरी चीज क्या आ सकती है? Charlie is both statements 1 and 2 are independent causes. Delta statement 1 and 2
are the effects of independent causes. And lastly, eta is both statement 1 and 2 are the effects of some कॉमन कॉज. सो ये 5 तरह के ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं. नंबर 1, स्टेटमेंट 1 is the cause and statement 2 is its effect. Secondly, statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Then both statements 1 and 2 are independent causes, and then 1 and 2 are the effects of independent causes. And secondly, last में जो आपको आएगा, lastly, that is statement 1 and 2 are the effects of some common cause. So इस तरह से ये 5 स्टेटमेंट्स आपको पूछी जाएंगी. पहली चीज जो आपने डिसाइड करनी है वो ये कि हाउ टू आइडेंटिफाई समथिंग, इफ समथिंग इज अ कॉज और एन इफेक्ट. वैसे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा, ठीक है, बट कुछ हिंट्स भी, कुछ कीवर्ड्स भी आपको हेल्प आउट कर देंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि वो कॉज है या इफेक्ट है. नॉर्मली जो कॉज होगी उसमें क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल डिसाइडेड, उसमें आ जाएगा कॉज्ड, उसमें आ जाएगा इंडिपेंडेंटली, उसमें आ जाएगा ऑटोनोमस, उसमें आ जाएगा फ्री, एटसेट्रा. ये जितनी भी चीजें आएंगी ये क्या करेंगी, दे विल टेल यू कि ये कॉज है. जैसे मैं कहूं कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, तो डिसाइडेड का मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली उसने क्या किया है, डिसीजन किया है, ठीक है. या मैं कहूं कि हैवी रेनफॉल हैज कॉज्ड फ्लड्स, तो हैवी रेनफॉल क्या है, दैट इज शोइंग द कॉज. फिर इसी तरह इंडिपेंडेंटली, जैसे या इंडिपेंडेंट, जैसे मैं कहूँ, या ऑटोनोमस भी उसी में ही आ जाएगा कि द ऑटोनोमस बॉडी हैज implied, has leveled attacks, ठीक है. तो अब leveled क्या होगा, इंडिपेंडेंट बॉडी है तो वो क्या कर रही है, नाफिज कर रही है. इसी तरह implemented, implemented भी क्या आएगा, मैं लिख भी देता हूँ इसके साथ ही इसको, implemented, leveled. All these things will show that this is something independent, ठीक है. ये probably, ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, बट आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक चेक आपको दे रहा हूँ कि इन चीज़ों से फर्दर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज probably a cause and not an effect. जबकि दूसरी तरफ अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, had to, forced, compelled, followed या following, ठीक है, एटसेट्रा. ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं
कि someone is being forced to, compelled to, he is following a direction, तो जब following, forced, compelled to, had to आ जाएगा तो फिर क्या होगा, obviously फिर वो causes नहीं रहेंगी, फिर वो क्या हो जाएंगे, effects रह जाएंगे। फिर एक और चीज से भी आप देख सकते हो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा दैट इज नॉर्मली द कॉज, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, दैट इज इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आपको पता है कि हम फ्यूल मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर फ्यूल प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मली हमें क्या करना होगा, लोकल मार्केट में भी अपनी प्राइस एनहांस करना होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस है वो क्या होगी, इन दिस रिस्पेक्ट इट विल बी कॉज, और लोकल मार्केट की प्राइस क्या हो जाएगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये खुद ब खुद चेंज नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये उस इंटरनेशनल प्राइस के नतीजे में हो रहा है चेंज। तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर वन। नंबर टू, डिपेंडेंट एंड independent variables will be decided with respect to given problem। जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फैसला होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे कि जी इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइस बढ़ेगी तो लोकल मार्केट में भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, दैट वाज एक्चुअली इंटरनेशनल प्राइस, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इफेक्ट था वो क्या था, दैट वाज आवर लोकल प्राइस। बट द प्रॉब्लम इज कि अब आपका कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आ सकता है कि सर इंटरनेशनल मार्केट भी तो ऑब्वियसली, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय सो मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो वो भी फिर क्या हो जाएगी, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर लेना चाहिए। भाई यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वो नहीं कंसिडर हो रहा, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो इंटरनेशनल प्राइस जो है दैट इज इफेक्टिंग द लोकल प्राइस। हाँ, अगर हम बात करते हैं सपोज कि इंटरनेशनल वॉर्स हो रही हैं, ठीक है, या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द फ्यूल इज हाइकिंग, तो फिर क्या होता, फिर इसी स्टेटमेंट में रहते हुए इंटरनेशनल प्राइस जो थी फ्यूल की वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता, और म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्या हो जाता, दैट वुड हैव बीन आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने देखिए वजह तो हर चीज की कोई ना कोई तो होगी ना, बट आपने उसका बैकग्राउंड नहीं डिस्कस करने बैठ जाना, आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रहते हुए देखना है कि यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी आवर कॉज, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इफेक्ट। अब हम आगे देखते हैं कि इन 5 स्टेटमेंट्स में से हमने ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 और 2 तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि ये कॉज और ये इफेक्ट है। ये देखना बाकी है कि 1 और 2 ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज कैसे होंगी। ये स्टेटमेंट सी और डी ये दोनों देख लीजिएगा पहले ऑप्शंस, ये हम सिर्फ उसी सूरत में करेंगे if
the two statements are not linked to each other. अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये तो हमने डिटर्मिन कर लिया ना कि इफेक्ट और कॉज कैसे डिटर्मिन करना है, तो आप ये तो अंदाजा हो जाएगा आपको पहले कि ये कॉजेज हैं या ये इफेक्ट्स हैं, ये तो अंदाजा हो जाएगा ना आपको। असल प्रॉब्लम अब ये है कि इनको ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं या इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, अगर तो आपस में कनेक्शन बन रहा है तो फिर तो हम इस पे आ जाएंगे ना, इस वाली पे, फिर हम आपस में इनको डिसाइड कर लेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट। अब इंडिपेंडेंट कॉजेज कैसे बन जाएंगी? इंडिपेंडेंट कॉजेज ऐसे बन जाएंगी कि दो ऐसे सिनेरियोज आपको दे दिए गए कि जिसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि रशिया हैज डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन, ये भी अब एक इंडिपेंडेंट कॉज है, उसके आगे इफेक्ट्स हम देखेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम कहेंगे कि यूएसए हैज डिसाइडेड टू अटैक क्यूबा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें। नाउ दिस इज अगेन टू इंडिपेंडेंट कॉजेस, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट एरियाज, टू डिफरेंट कंट्रीज एंड टू डिफरेंट अप्रोचेस, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों ही क्या होंगे, दे विल बोथ बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट कॉजेस। अच्छा, अब स्टेटमेंट 1 और 2 इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? इफेक्ट्स बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल में भी बात की थी कि प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट आर गोइंग अप एंड प्राइसेस इन द लोकल मार्केट आर गोइंग डाउन। अब प्राइसेस का अप एंड डाउन होना बुनियादी तौर पर तो क्या है, इट्स एन इफेक्ट, बिकॉज प्राइस बहुत सारे इफेक्ट से, बहुत सारे फैक्टर्स से जो है वो इन्फ्लुएंस होके कम या ज़्यादा होगी। तो प्राइमरली तो क्या है, बुनियादी तौर पर तो इट इज़ एन इफेक्ट, बट इन द इंटरनेशनल मार्केट इट इज़ गोइंग अप, इन द लोकल मार्केट इट इज़ गोइंग डाउन। तो ये हैं दोनों ही इफेक्ट्स, बट दे आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉजेज। दो अलग अलग कॉजेज है, इंटरनेशनल मार्केट में पता नहीं क्यों बढ़ रही है और लोकल मार्केट में पता नहीं हम क्यों नहीं बढ़ने दे रहे या क्यों उसको कम कर रहे। सो ये हो गया इनका ऑप्शन सी और डी की एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दे विल बी कंसिडर्ड जब दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, द लास्ट वन, ऑप्शन ईटा। देन व्हेन शुड वी कंसिडर दैट स्टेटमेंट 1 and 2 are the effects of some common cause? Common cause क्या होती है कि बात एक ही हो, इवेंट एक ही हो और उसके इफेक्ट्स डुअल हो रहा हो। मसलन अभी हम बात कर रहे थे फ्यूल प्राइसेस के हवाले से, तो अगर मैं ये कहूँ कि प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट आर गोइंग अप ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज and prices in the local market are also going up, तो ये क्या हो जाएगा, they are the effects of some common cause, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस बढ़ रही है ड्यू टू द म्यूचुअल डिफरेंसेस ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो वहाँ भी इफेक्ट है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी प्राइस तो यहाँ लोकल मार्केट में भी प्राइस बढ़ेगी। तो ये दोनों ही क्या हैं, दे आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन। कॉमन कॉज को एक और तरीके से भी समझ लें आप। कॉमन कॉज को समझने का एक तरीका ये भी है कि अगर वो कॉज रिमूव कर दी जाए, इफ दैट कॉज इज रिमूव्ड, तो क्या वो दोनों इफेक्ट्स खत्म होंगे? ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर वो म्यूचुअल डिफरेंसेस जो थे वो खत्म हो जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होगी तो लोकल मार्केट में भी ऑब्वियसली प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वो कॉज अगर रिमूव होगी तो वो इफेक्ट्स दोनों ही इन द सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, क्योंकि उस कॉज के खत्म होने से अगर एक फैक्टर अपवर्ड, एक वेरिएबल अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी अपवर्ड जाएगा, और एक वेरिएबल डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। यूं समझ लें कि इसके मैं इधर लिख देता हूं नीचे, बोथ वेरिएबल्स will move
in the same direction. तो अगर तो वो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उससे भी आप बड़ा इजीली अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज. ये वजह एक ही है बुनियादी तौर पे और उसकी कॉजेस क्या हो रहे, उसके इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं. अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स और चेक करते हैं कि कैसे इन डिफरेंट ऑप्शंस को हम यूटिलाइज करेंगे. Let's students, we are at the lightboard once again with examples. I'm writing down the options here and then we can use these two portions for our examples so that we do not have to repeat the options again and again. Option alpha is statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. Beta is statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Charlie statement 1 and 2 are independent causes are independent causes. Delta is statement 1 and 2 are the effects of independent causes and eta is both statement 1 and 2 are the effects of some common cause. So examples मैंने आपके लिए लिख दी, options sorry लिख दी. Now move on to the examples. Question 1 is statement 1 government has lowered the fees of private medical colleges this year.
and statement 2 is parents of the aspiring medical students have been protesting vigorously for the last 1 year against the high fees of medical colleges in private sector. Now, you can easily guess that because the parents have been protesting against the high fees of medical colleges in private sector for the last 1 year, that is why the government has compelled the private medical colleges to lower their fee. ये जो एहतजाज है इसी की वजह से ही ऐसा मुमकिन हो पाया कि गवर्नमेंट कंपेल हुई, मजबूर हुई to ask the private medical colleges to lower their fee. So we can easily conclude that in this particular question our correct option is option beta. क्यों beta option correct है? अभी बता दी रीजन कि भाई उनका एहतजाज रंग लाया है. Because they were protesting, the government was forced to direct the private medical colleges to lower their fee. So इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है. अब ये देख लें कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या है, दे आर रेलेवेंट टू ईच अदर. और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों चीज़ें रेलेवेंट हों आपस में दोनों स्टेटमेंट्स, तो फिर हम किसको कंसिडर करेंगे, देन विल गो फॉर द फर्स्ट टू ऑप्शंस, ऑप्शन अल्फा और ऑप्शन बीटा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है. State Bank of Pakistan has put some restrictions on the small commercial banks. And the statement 2 is small commercial banks have not been able to withstand the competition by the bigger banks. So यहाँ भी clearly आपको पता है has put some restrictions लगी हैं तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई कॉज तो होगी ना. ऐसे बिला वजह तो कोई पाबंदी नहीं लगाएगा. बट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि सेकंड में उन रिस्ट्रिक्शंस की सेकंड स्टेटमेंट में इज देयर एनी लॉजिक, इज देयर एनी रीजन अवेलेबल फॉर पुटिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस.
Yes, that reason is available. और वो reason क्या है? That they have not been able to withstand the competition by the bigger banks. कि वो उस market में stand ही नहीं कर रहे and they are facing continuous losses. तो as a result, State Bank ने क्या किया? State Bank ने उन पे कुछ restrictions लगा दिए हैं कि if you have to operate, you will have to follow a certain procedure so that you can withstand that competition. एमी मुंह उठा के हर चीज़ में आपको हम involve नहीं करेंगे. You should behave according to your size. So we can clearly tell that statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. So again in the second one too we are going for option B. So ये तो आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तरह आपने बीटा ऑप्शन चूज करनी है where the statement 2 will be the cause and statement 1 will be your effect. अब हम चलते हैं बाकी के सिनेरियोस की तरफ. Students, we are now moving on to another example. That is our question 3. And statement 1 is, the school authorities have arranged free classes in the evening for week. Students, parents of weak students have withdrawn their children from evening coaching centers. Now here you can easily identify that statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. Why? Because उन्हीं बच्चों को जब फ्री एजुकेशन वहाँ पे मिल गई तो उनके जो पेरेंट्स थे, what did they do? They decided to withdraw their children from the evening coaching centers. Because वहाँ पर वो paid जा रहे थे और वहाँ पर उन्हें क्या था? They had the luxury of free classes. So here our right option will be option alpha. But again I am telling you that option A and B can only be considered if the two statements are interlinked. अगर तो ये connected है, interlinked है, only then you will go for option A or B. एक और example करते हैं, फिर देखते हैं कि दूसरी example में हम क्या scenario build करते हैं. Question 4, statement 1 is, there is a remarkable increase in unemployment during the last year, and statement 2 is,
a large number of educated individuals have applied for a few seats in banking sector. Now here you can again very easily conclude that because there is unemployment in the country or the unemployment is on the rise, पिछले साल के दौरान बहुत बड़ी है, तो as a result क्या होगा? As soon as people will get a chance, they'll put in for that post. So यहाँ भी क्या हो रहा है? Statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. Because अगर unemployment ना होती तो फिर लोग कभी भी उस थोड़ी सी जॉब के लिए जो है वो इतने ज़्यादा लोग जो है वो कभी भी अप्लाई ना करते. It is a clear signal that this action is due to that statement 1. So यहाँ भी हमारी ऑप्शन क्या होगी? यहाँ भी हमारी ऑप्शन होगी ऑप्शन अल्फा. So hope you'll get to know कि किस तरह से हमने ऑप्शन अल्फा और बीटा चूज करनी है. पहले इनका इंटरलिंक देखना है, कनेक्शन देखना है इनका. इफ दे आर इंटरलिंक्ड, इफ दे आर इंटरकनेक्टेड, देन डिसाइड करना है कि कॉज कौन सी है और इफेक्ट कौन सा है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन यू विल गो फॉर ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. नाउ लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग 3 possibilities with the help of different examples. So क्वेश्चन 5 हम करने जा रहे हैं जी. देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं. Pakistan has surpassed the value of tea export during the last year due to an increased demand of tea in American market. There is an increased demand of beverages during the last year in local market. Now here at the first place you will have to decide whether it is an effect or it is a cause. Now Pakistan has surpassed the value of tea export. This is the event ना, और इसकी automatically reason उसने यहीं दे दी due to an increased demand of tea in American market. So this action, it automatically, even the first statement proves that this action is not a cause, it is an effect. And this effect is because of the increased demand of tea in American market. तो ये तो clear हो गया कि ये cause नहीं है, ये क्या है, ये effect है.
and then there is an increased demand of beverages. Now demand we already know कि demand क्या होती है, it is affected by so many factors. demand खुद से generate नहीं होती, demand बहुत सारी reasons से मिलके generate होती है. just like यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये demand generate हुई होगी, तो यहाँ पर तो ये इसके cause बन रही है, but itself demand क्या होती है, it is a result of so many different factors. तो यही मैं कह रहा था आपसे बिल्कुल स्टार्ट में इस लेक्चर के कि आपने केस टू केस उसको लेके चलना है, बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है. अब वैसे तो यहाँ देखिए कि वैसे तो डिमांड जो है इट इज एन इफेक्ट, बट हियर इट इज एक्टिंग एज अ कॉज. और यहाँ पे इफेक्ट क्या है, हमारा टी एक्सपोर्ट जो है दैट इज आवर इफेक्ट, बट प्राइमरली डिमांड इज एन इफेक्ट नॉट अ कॉज. तो ये जो डिमांड बढ़ी है ये भी क्या है, इफेक्ट है, और ये जो वैल्यू ऑफ टी एक्सपोर्ट बढ़ी है ये भी इफेक्ट है. सो ये तो क्लियर हो गया कि ये इफेक्ट है. नाउ द ओनली क्वेश्चन विल हैव टू डील विद कि ये कॉमन कॉज के इफेक्ट है या इंडिपेंडेंट कॉजेस के इफेक्ट है. कॉमन कॉज के इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए था, दैट द बोथ द वेरिएबल्स शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड दे शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन विद ईच अदर. अब ये एक ही वेरिएबल मूव कर, ये भी बढ़ी है और ये भी बढ़ी है, बट डू यू थिंक दे आर इंटरकनेक्टेड? नो, बिल्कुल भी नहीं, इंटरकनेक्टेड तो नहीं है. इसलिए दे कैनॉट बी द इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज, दे मस्ट बी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. हाँ, इसकी जगह अगर ये होता, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर हम करते ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ऐसे ही रहती और नीचे में लिख देता कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ टी इन द लोकल मार्केट, या मैं कहता हूँ कि पीपल आर सेलिंग टी in black market on a really high profit in domestic market, तो फिर ये क्या होते, फिर ये होते they would have been the effects of some common cause. फिर तो ये common cause के effect होते, क्योंकि वो टी जो है वो सारी कहाँ चली गई, अमेरिकन मार्केट में बाहर एक्सपोर्ट कर दी, एंड एज अ रिजल्ट लोकल मार्केट में क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया. तो दैट इज गुड इनफ, रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है. बट हियर यहाँ हम बात कर रहे हैं टी की और यहाँ क्या बात कर रहे हैं, beverages की. So the demand of tea has nothing to do with the demand of beverages. That is why 1 and 2 are the effects of some independent causes. ठीक है, ये एक दूसरे के इफेक्ट नहीं है. So our right option will be option D. अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स और चेक करते हैं कि इस तरह से हम सारे सिनेरियोज को इवेलुएट करेंगे. Ladies students, we have another example for you, and that is question number 6. Statement 1 is the government universities have decided to decrease their annual fee, and beta, the private universities have decided to increase their fee by 25%. Now these two statements, at the first place you will have to check whether they are interlinked or not. तो इंटरलिंक तो नहीं है, ठीक है, एक बढ़ा रहा है एक नहीं बढ़ा रहा. इट मीन्स इफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट इंटरलिंक तो ऑप्शन अल्फा, बीटा एंड ईटा दे आर एक्सक्लूडेड. अंडरस्टूड हो गया ना, क्लियर होगी बात कि ये तो क्या हुई, एक्सक्लूडेड होगी. अच्छा, नाउ टॉक अबाउट इफेक्ट्स. तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये इफेक्ट्स हैं या नहीं है. अब हम इफेक्ट और कॉज को पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे. सबसे पहले देखें कि यहाँ पर अगर ये इफेक्ट हैं तो कोई कॉज मेंशन हुई है.
they have decided independently. Okay? So when they have taken a decision independently, it automatically means that we are not talking about effects, we are talking about causes. So यहाँ पर हम क्या करेंगे? The right option will be statement 1 and 2 are independent causes. इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. Let's take another example. Question 7. Statement 1 is, there has been a considerable reduction in waterborne diseases in a certain area. And the statement 2 is, government has opened a new hospital in the concerned area. Now this looks very tricky, and you will tend to go for option beta, that statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. But ऐसा नहीं है, it is not the case. बड़ी एक thin line है, एक बारीक सा difference है. I am telling you. Look, they have opened a hospital. Opening a hospital can never reduce the waterborne diseases. Yes, they can treat them, but उनके reduction में hospital has no role to play. उसके reduction में तो कोई role नहीं हो सकता ना. ये तो हो सकता है that the number of deaths through waterborne diseases have been reduced. तो फिर तो होता कि yes, the hospitals might have treated them. That is why we haven't seen any deaths. But we are not talking about deaths. We are talking about itself the waterborne diseases. Waterborne diseases का opening of the hospital से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. हाँ, अगर होता ना कि government has supplied clean water to that particular area, तो फिर होता statement 2 and statement 1 is its effect. Because waterborne diseases are caused by polluted water. तो अगर उन्होंने clean water पहुंचा दिया, तो it means के statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. So ये तो बनती है बात. पहले वाली बात जो हमारे पास मौजूद है, ये कोई आपस में सिनेरियो मैच नहीं होता. Now, opening a hospital, can it be an effect? No, it is a cause. So, ये भी क्या होगी? Considerable reduction भी क्या होगी? It will also be a cause. Although कि आपको लग ये रहा होगा कि ये statement है, ये effect है, but it is not an effect. It will affect something. It will affect the lives of the people, but itself ये reduction जो है ये क्या है? ये एक cause है. It is not an effect. और इसको strengthen आप कर सकते हो अपनी दूसरी statement से, because opening a hospital is not an effect. उसके कोई हमें cause दी भी नहीं हुई, तो इससे भी पता लग रहा है. It is not an effect. That is why we are going for option Charlie and not any other option. Now talk about the last one, option eta. Both statement 1 and 2 are the effects of some common cause. Common cause क्या होती है? Let's say government has evacuated many people from the flood hit areas in last 2 days.
government has provided a large amount of food and water in those areas. Now here you can easily tell that both these actions have been taken because of the same cause. Cause क्या थी? The flood. सैलाब आया तो दोनों ही काम उन्होंने किए. Number one, they evacuated many people as they could from the flooded areas, and secondly, because of the same cause, because of the same reason, they provided a large amount of food and water in those areas. So here our option will be option Charlie and not any other option. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी की. Rural areas have been facing load shedding for the past 2 decades, and beta urban areas have also been facing load shedding for last 6 months. So if you evaluate these two statements, you can easily tell that the reason for both these incidents is the same. और वो क्या है? That is the power shortage. If you do not have enough power, if you do not have electricity, yes, for the past 2 decades, it was only limited to rural areas, but now it has also been extended to urban areas. But the cause of both these actions is the same. That is why we can safely say that both statement 1 and 2 are the effects of some common cause, and that is shortage in power. Hopefully इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये चीज़ें जो वो समझ आ गई होंगी और जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन थी इससे रेलेवेंट वो दूर हो गई होंगी.